Wabarakatuh, dear students. I'm your education teacher, Mr. Tariq, and this class is specially designed for 12th class students. So, dear students, we have completed the population education chapter. We had been doing a, a lecture series on population education, and today we are going to move to our next chapter, and this is the sixth chapter of your textbook, that is M.K. Gandhi and the philosophy and works of M.K. Gandhiji as an educationist. Yesterday, students, we discussed about Mohandas Karamchand Gandhi's life sketch, and we discussed about his biography yesterday. Where he was born, where did he receive his education, how many books he published. And today, dear students, we will discuss about the general philosophy of Gandhiji. So, dear students, I will try to explain you that Gandhiji's three philosophy of life was he had a firm faith in God. He had a firm faith in truth. He was believing in non-violence. He was believing in Satyagraha. He had a spiritual nature of individualism. He was believing in love. So this was Gandhiji's philosophy. Gandhiji was altogether a naturalist. He was an idealist. He was a pragmatist as well. So, dear students, so what was the general philosophy of Gandhiji, dear students? As you know, Gandhiji was a great philosopher of the world, we can say. But in India, he is called the father of our nation. You know, dear students, Gandhiji was a great educationist. He was a great experimentalist. He had a firm faith in God. He was deeply influenced by the humanistic idealism of Indian past. So we will try to understand Gandhi's philosophy. Number one, dear students, Gandhiji had firm faith in God. This is his first philosophy. So Gandhiji, he was an idealist. Idealists are those philosophers who believe an idea. An idealist type of philosophy is that kind of philosophy that believes in the existence of God, that there is God. अगर इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया को ख़त्म करने वाला कोई है, तो वो खुदा है जिसने इस सारी कायनात को बनाया है. वही इसका चलाने वाला है, वही इसको ख़त्म करने वाला है. So this is the ideal philosophy of idealists. So, dear students, as you know, that Gandhiji had a firm faith in God. He considered that God is all pervasive, God is a reality, God is eminent, and he believed that God is the ultimate reality and he is the supreme ruler. सो अगर वो यानी आखिरी अगर सच्चाई है दुनिया में, तो वो गांधी समझते थे वो तो खुदा है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, और जो सुप्रीम रूलर अगर इस दुनिया को चलाने वाला कोई है तो वो खुदा है. सो गांधी जी हैड अ फर्म फेथ इन गॉड. ही वाज बिलीविंग इन गॉड, दिस यूनिवर्स, these mountains, these rivers, these humans, these all plants, all have been created by the Almighty Allah. So Gandhi ji, Gandhi said that God is truth, and he said that God is truth, God is love, God is ethics, God is morality, God is source of light and life. Okay, so Gandhiji believed that God is the creator, he is a dissolver, he is a recreator. Means that Gandhi was believing all of that metempsychosis. In other we can say यानी जो खुदा है वो तो इस दुनिया को बनाने वाला है, उसी ने इस दुनिया को बनाना है, वो इसी दुनिया को चला रहा है, वही इसी दुनिया को ख़त्म करने वाला है. तो अब वो सारे इंसानों का हिसाब लेने वाला भी खुदा है. उस हम इंसान ने दुनिया में क्या किया, तो उसके बाद वो जज़ा और सज़ा मिलेगी.
किसी ने अच्छा किया होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, जिसने गलत किया होगा तो उसे दंड दिया जाएगा, उससे उसी तरह से उसका जवाब पूछा जाए कि आपने क्या किया, तो उसके लिए अल्लाह बचाए जहन्नम की आग में उसको डाला जाएगा, जहन्नम की आग में डाला जाएगा. सो गांधी हैड certain belief that God is created, God is dissolver, God is recreated, God is one who will punish everybody according to their deeds. So Gandhi advised everyone around him that one should have firm faith in God, that one should firm faith in God. If one is not having firm faith in God, we cannot consider he is a good person at all. So he advised everybody that we should believe in God because God is absolute. Okay. So Gandhiji believed that the ultimate aim of life should be the realization of God. So number 2, his philosophy was Gandhi truth. Gandhiji said that God is truth and truth is God. यानी खुदा सच्चाई है और सच्चाई ही खुदा है. गांधी कहते थे कि ट्रुथ इज़ द इनर वॉइस. ये जो ट्रुथ है ये एक इंसान के अंदर की आवाज़ है. ठीक है, यही सच्चाई है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा इनर आवाज़ क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल आपने किसी आदमी को किसी पर जुल्म करते हुए देखा, एक पुलिस वाला है, आपने देखा फलानी गरीब के साथ जुल्म हो रहा है. ये आपकी इनर आवाज़ है, ये सच्चाई है कि उस पर जुल्म हो रहा है. लेकिन आपने उस जुल्म करने वाले ने कहा कि यार होने दो, लेट इट बी, ये लो रिश्वत आप लीजिए, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए, मैं इससे खुद ही निपटाऊंगा. आपने रिश्वत ली, लेकिन आपने देखा कि उस आदमी पे जुल्म हो रहा है. ठीक है, लेकिन आपने देखा कि उस आदमी पे जुल्म हो रहा है, लेकिन फिर भी इस जुल्म को आपने नज़रअंदाज कर दिया, आपने रिश्वत दे दी. आपको आ गया समझ? तो यहाँ पर आपने जो अपना मटेरियलिस्टिक बिहेवियर इस्तेमाल किया, हालांकि आपकी इनर वॉइस ये थी उस पर जुल्म हो रहा है. सो इंसान के अंदर जो है वो सच्चाई है, हमें सच्चाई का हमेशा साथ देना चाहिए. ये तो गांधी जी ने बनाया था. सो गांधी जी कह रहा था ट्रुथ इज़ द कॉल ऑफ कंसाइंस. यानी जो ट्रुथ है ये सच्चाई है, ये इंसान की ज़मीर की बात है. So Gandhi wanted to realize truth himself. He wanted he wanted everyone to be a seeker of truth. Ultimate truth, or God is the end of philosophy. So Gandhi means the truth is the means to achieve that ultimate truth, or God. Gandhi himself said the truth is the end, and which all pervading can be realized only through truth. Okay, through a way of living characterized by strict discipline, poverty, non-profit position, non-violence, sense of humility, discipline of mind, body and spirit. यानी इसका मतलब ये है कि गांधी हमें ये बताने रहे हैं कि ट्रूथ सच्चाई से हासिल हो सकता है. ट्रूथ इंसान के अंदर तब हो सकता है जब वन पर्सन इज अ डिसिप्लिन्ड. ट्रूथ इंसान के अंदर गरीबी, यानी गरीबी से जीना है, यानी मकान, दौलत, ठीक है, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी कमाना, ये दिस नॉट ट्रूथ. बिकॉज सब इंसानों को दुनिया में यहाँ नहीं रहना. नो वन हैव टू स्टे हियर. ये दुनिया एक दिन सबको छोड़ के जाना है. सो गांधी जी बिलीव इन नॉन पोजिशन. गांधी जी अपने पास कोई भी चीज़ नहीं रखते थे. वो जिन ये फना होने वाली चीज़ है, वो वही कमाते थे जो शाम को खाते थे. वो हमारे मुसलमानों का यही है, अकीदा भी है, जो हमारे सहाबा किराम भी वही खाते थे, दूसरे दिन को नहीं रखते. दे आर नॉट बिलीविंग ऑन दीज थिंग्स. नॉन वायलेंस से हम अहिंसा कहते हैं. ही वॉज बिलीविंग ऑन ह्यूमिलिटी. He was believing on discipline of mind, body and spirit. So this was one of the philosophy of Gandhi. And third, the greatest philosophy of Gandhi was ahimsa, non-violence. यानी वायलेंस से बच के रहना, अहिंसा करना. Gandhi believed that non-violence is the means to attain the goal of truth. यानी नॉन वायलेंस से ही इंसान सच्चाई तक पहुंच सकता है. सो
जो ये अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब है कंप्लीट फ्रीडम फॉर हिंसा, यानी वायलेंस से पूरी तरह से आज़ाद होना। इंसान के अंदर किस चीज़ से हमें इंसान के अंदर किस चीज़ से आज़ादी होनी मतलूब है कि हमें नफ़रत से आज़ादी मिलनी चाहिए, गुस्से से आज़ादी मिलनी चाहिए, फियर, डर से, वैनिटी से, ठीक है, इलविल से। तो इंसान के अंदर ये कैसे, ये चीज़ें कैसे इंसान की, अभी हम ये जज्बात हैं इंसान के अंदर, ये कैसे मुमकिन है? ये इंसान के अंदर ह्यूमिलिटी के ज़रिए आ सकते हैं, चैरिटी के ज़रिए आ सकते हैं, लव के ज़रिए इंसान के अंदर आ सकते हैं, पैशंस के ज़रिए इंसान, प्योरिटी के इंसान के अंदर जो प्योरिटी ऑफ हार्ट है उसके ज़रिए इंसान के अंदर आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सो गांधी भी दैट फ्रीडम फ्रॉम पैशन इज ट्रूथ through word and action. So non-violence makes us to understand that we should love all creatures. When we love creatures, it purifies our spirit. Okay, so Gandhi's, these were the philosophy of Gandhi. There are certain other things that Gandhi believed, that he was believing in satyagraha. Satyagraha means the practical application of ahimsa. यानी सत्याग्रह का मतलब होता है कि तपस्या हम जिसे कह सकते हैं, यानी अपने आप को अपने आप को मुश्किल में इस तरह से डालना कि गरीबी की ज़िंदगी बसर करना, किसी को कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाना, उससे हम तपस्या कह सकते हैं, सत्याग्रह कह सकते हैं। सत्याग्रह वन ऑफ द philosophy of Gandhi. So love was the philosophy of Gandhi. So these were the things, these were the philosophy that we discuss it here, students. Today, tomorrow we will discuss it further. Thank you very much. Stay safe and stay healthy.